तो कंटेनर के लिए यू नीड कंटेनर रन टाइम, सही है। तो कंटेनर रन टाइम, ये डॉकर डेस्कटॉप आप भी वो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर व्हाट हैपेंस इज यू कैन व्हाट यू कैन डू इज इट गिव्स यू कंटेनर रन टाइम, सही है। सो डॉकर इज अ कंपनी, लेट मी सी, मैंने इसमें एंड नो नीड टू गो टू मच डिटेल्स, ये मैं आपको इसकी मोटिवेशन बता रहा हूँ टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, सही है। इट इज़ नॉट इंटेंट कि मैं कोई चीज़ें टेस्ट करूंगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन। उस मोटिवेशन के लिए हम गिविंग लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, सही है। दैट्स द होल थिंग। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड आउट इसके अंदर। ये हमारी इंटरनल स्लाइड डेक्स है, मैं थोड़े से ना वो करके मैं भेजूंगा आप लोगों को भी। दिस इज़ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, समबडी वांट्स टू गो डीप। ये हमारी इंटरनल ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल हुई है स्लाइड डेक। लेट मी सी इफ आई कैन ओपन इट अप अगेन। आई एम गोइंग लिटिल बिट मोर डिटेल देन नेसेसरी राइट नाउ। ये देखो, दिस इज अब यहाँ पे दिस इज द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड कंटेनर्स वर्सेस वीएम। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस वन, राइट नाउ। This is something you should be very very clear, right? उसके बाद how containers work। अब ये स्लाइड है जो है इट्स लिटिल बिट डीप, सही है। आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स, मैं दे दूंगा तुम लोगों को, लेकिन सही है। देखो कंटेनर्स क्या हैं, आई विल गो इनटू द रीड मोड, सही है। A technology for packing and running Windows and Linux application across any kind of environment, सही है। Lightweight environment है, easy to develop, deploy and manage, start and stop quickly, सही है। Anywhere कर लो इसको, जिस तरह मर्जी एप्लीकेशन है। और वो क्या इसमें उसमें आप देखोगे कंटेनर्स की स्लाइड के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो सर्विस। प्लीज गो ओवर इट, अंडरस्टैंड दैट इज वन ऑफ द मोटिवेशंस ऑफ कंटेनर्स। माइक्रो सर्विस किसी ने पढ़ा क्या है, इसको टाइम मिला पढ़ने का वो स्लाइड? यस सर। क्या है माइक्रो सर्विस? सर बेसिकली उसकी एक एग्जांपल थी बड़ी बेसिक, वो वीडियो में भी मेंशन की थी। इफ़ यू हैव एन एप्लीकेशन जिसके तीन एस्पेक्ट्स हैं, देयर इज अ फ्रंट एंड, बैक एंड एंड अ स्टोरेज डिवाइस। यू कैन स्प्लिट अप योर वेबसाइट इन थ्री कंटेनर्स। एक कंटेनर में फ्रंट एंड डाल दो, एक में बैक एंड डाल दो, एक में स्टोरेज। एंड इफ़ यू वांट टू स्केल बैक एंड, अगर आपकी नीड ज़्यादा होगी तो यू कैन सेपरेटली स्केल योर द कंटेनर ऑफ बैकअप। यू डोंट हैव टू scale three things at the same time. So this is the one of the value addition of container. Microservice architecture, Yeah, Microsoft, yes, which microservice architecture. are implemented as containers, सही है। Yeah. तो मैंने बेसिकली जस्ट टू पुट दिस इन, मैं इसको विजियो में, अगर इफ आई मेक इट इन विजियो, राइट, लेट मी सी कॉल पे विजियो, वी हैव विजियो। इसको अगर मैं करूं आइडिया, ये मेरी एप्लीकेशन है, इसका ये फॉर एग्जांपल वेब है, सही है। then it has उसका दूसरा component is sitting, for example some backend means it could be, for example, business logic, something, some component, some library, right, that it front end calls, and this guy calls the database। ये मेरे तीन layers हैं उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके कंटेनर्स बना लूंगा, मैं इसको कंटेनर में कर दूंगा, सही है। और इसके मैं दो तीन कंटेनर्स के बना लूंगा। तीन क्यों चाहिए होंगे मुझे, क्योंकि एवरीबडी इज कमिंग ओवर हियर, सही है। एवरीबडी इज कमिंग, इज हिटिंग, सो इज हैंडलिंग ऑल द लोड। उसके ऊपर हु डज बिजनेस लॉजिक, देयर बी मे बी लेस नंबर ऑफ यूजर्स, मे बी मैं इसके दो कंटेनर्स बना लूंगा, सही है। और डेटाबेस एवरीबडी इज कम, आई कैन मेक टू आल्सो, ताकि मुझे रेजिलियंसी मिल जाए, क्या कुछ, सही है। So you can scale them differently, you can update them differently, and on and on.
मैंने अगर ये वेब एप्लीकेशन चल रही है, मैंने कहा जी मैंने इसका नया वो वर्जन डालना है, आई कैन अपडेट दिस मंथ विच वेरी वेरी ब्रीफ डाउन टाइम, मुझे सारी चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। दो सम ऑफ द क्या कहते हैं, सो यू ब्रेक डाउन एप्लीकेशन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक सेकेंड, you break down application into different components. So that's the idea into very, and the concept now always go over the name. Microservices, these are services but very small, broken down into very small components. So what helps in developing building microservices? Containers. So yeah, ये slide deck is a little bit deep, ये हमारा internal है, so you will see something. So yeah, I will not go over this slide deck. Again, a little bit deeper information, ये पढ़ लेना, I don't want to discuss this one right now. ठीक है, ये देखो कर्नल, सही है, it uses OS kernel, जो हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, दैट्स ऑल इट नीड्स। ऊपर की सारी APIs आर बिल्ट इनटू कंटेनर, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज चाहिए, नथिंग एल्स, एंड दिस इज द कोर वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ दिस थिंग। वो मैंने जो वीडियोस डाली है ना IBM की, दोज आर वेरी वेरी गुड, वो देख लेना, सही है, गिव यू वेरी वेरी गुड मोटिवेशन, सही है। तो ये OS है जो Sir, हाँ, sorry for interruption. Sir, what's the role of Kubernetes in containers? I'll come. I actually watched the video, but what I understand is it is something to manage large streamlines of containers. But अगर आप उसको थोड़ा सा बता दें briefly, तो it would be great. Come to that. I'll come to that. मैं containers को जरा सा बता दूँ, I'll come to the Kubernetes. We'll come to Kubernetes. सही है। ये VM चल रही है। Sure. तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, दिखाएं, सही है। मैं इसमें ये मैं जा रहा है इसके अंदर, सही है। अभी देखो, Docker is a project name, is a company name, सही है। So it provides you certain things, and this is the one who pioneered this one, सही है। तो Docker के अंदर, so अब मैंने बताया जो इमेज है ना, इट्स अ टेम्पलेट ओनली, इमेज इज यूज टू बिल्ड एंड रन द कंटेनर, सही है। और डॉकर ने अपना हब बनाया हुआ है, इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस, यू कैन स्टोर दोज इमेजेस, इट कैन डाउनलोड दोज इमेजेस एज वेल, सही है, फ्रॉम दैट वन, एंड वी विल सी दोज थिंग्स। यार ये ना एडवांस स्लाइड डेक है, लेट मी सी समथिंग सिंपलर, सही है। सो लेट मी लॉग इन इनटू दिस वन, एंड मैं दिखाता हूँ हमने डॉकर हब से किस तरह लेना है। ये मेरा लॉगिन हो रहा है सेपरेट स्क्रीन के ऊपर, तो लेट मी जस्ट सी। Okay. नाउ इन्होंने अपना हब बनाया हुआ है टू क्या कहते हैं, वेयर दे हैव द इमेजेस, सही है। एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन बेसिकली रन डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल दैट, राइट। इमेजेस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी रखे हुए हैं, यहाँ पे हब है, एंड लेट मी सी, एंड यू कैन पुट योर ओन इमेजेस आल्सो ओवर देयर, सही है। सो आई कैन गो, अगर मैं डॉकर हब के ऊपर जाता हूँ, मोर इन डॉकर डॉक्स, ओके, लेट्स सी। तो मुझे वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन कीप इट लोकली, लेकिन यहाँ पे हर एक ने बना के रखे हुए, लॉट ऑफ टाइम यू कैन गेट एन इमेज दैट यू नीड, ठीक है।
ये हमने कर लिए and let's see the Docker hub. If I can go into, I think it's hub.docker.com or something. तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है to see the image and run it. Right now that's all I want to do. Later on we can go into I think it's hub.docker.com. यहाँ पे हर एक ने अपने इमेजेस रखे हुए, सही है, पब्लिश किए माइक्रोसॉफ्ट ने, एवरीबडी एल्स। सर इमेज से मुराद इधर कोई स्टेट है? नहीं, इमेज इज हमने अभी पढ़ा था कि इट्स अ पैकेज, इट्स अ पैकेज जिसमें हमने एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज पैकेज की हुई हैं, सही है। और मैं भी दिखा देता हूँ आपको क्या है वो, सही है। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर मुझे टॉम कैट चाहिए, वेब सर्वर। मैंने वेब सर्वर रन करना है, उन्होंने कहा जी हमारा ये है ऑफिशियल इमेज है, सही है। अब ये देखो इन्होंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें पैकेज जो चीज़ चाहिए ना उसे चलने के लिए, ये देखो ये कह रहा है आप ये कमांड करो, ये वेब सर्वर का इमेज चल पड़ेगा आपके पास, सही है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ पे जाऊँगा इसके पास और मैं आई कैन गो इनटू आई थिंक कमांड लाइन के ऊपर ही मुझे वो मिल जाएगा इफ़ आई डू दिस, सही है। मैंने डॉकर इंस्टॉल किया था, वो मुझे कमांड लाइन ऑप्शंस दे देता है। सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट डू दैट, राइट। मैं लिटरली ऑल आई डू इज़ मैं को डॉकर पुल टॉमकैट, then go to the hub, pull the tomcat image, create the container out of it and start running, सही है। this is the value proposition. अब I don't care उस एप्लीकेशन को क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, I do not care, सही है। all it needs is कि वो ये देख रहा है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करनी चाहिए उसको सिर्फ, which I have, सही है। it will start running. so let's see, जब इमेज डाउनलोड हो रहा है तो पूरी एप्लीकेशन विद ऑल इट्स डिपेंडेंसीज इज बीइंग डाउनलोडेड, सही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंटेनर्स एंड यू आर गारंटीड दैट इट विल रन, यू आर गारंटीड, सही है। मैं कुछ और सर कंटेनर ओवरकम्स दैट ही शी प्रॉब्लम ना कि मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है तुम्हारे कंप्यूटर पे नहीं चल रहा, इट पैक्ड एवरीथिंग इन अ पैकेज इमेज and we expanded that through any container just like Docker and done it straight away. अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगले को, एडमिनिस्ट्रेटर को, आपने क्या करना है। मैं सोचूंगा यार मेक श्योर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इट हैज अ कंटेनर रन टाइम रनिंग, सही है। तो जनरली डॉकर आप इंस्टॉल कर लो, उसके ऊपर कंटेनर की रन टाइम को इंस्टॉल कर देते हैं आपकी, सही है। एंड देयर अदर वेज दैट डन आल्सो। अब ये देखो वो कह रहे हैं जी आ गया आपका, ये आपका टॉम कैट इमेज आ गया। मैं डॉकर डेस्कटॉप पे जाऊंगा ना, वेयर इज डॉकर डेस्कटॉप इमेजेस वो कह रहे हैं जी आया आपका ये, सही है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल से रन। अब इसमें समटाइम्स यू कैन प्रोवाइड देम ऑप्शनल थिंग, सही है। पोर्ट्स मैं कहूँ जी फास्ट टॉम कैट, और ये देखो वो कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट इज 8080, वैसे ही का पोर्ट होता है HTTP का। व्हाट इज द पोर्ट फॉर 80 80 होता है, HTTP का पोर्ट 80 है। तो उसने कहा अगर आपने हम बाय डिफॉल्ट इट विल डू दिस वन, बट इफ यू वांट टू ओवरराइड यू कैन पास दिस पैरामीटर टू द कंटेनर। मैं कहता हूँ लेट्स डू 80 ओनली, आई डोंट नीड टू एनीथिंग एल्स। यानी प्रोडक्शन के लिए आप कुछ और चीजें भी करोगे बट वी आर फाइन, सही, लेट्स रन इट। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंटेनर रन किया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इज रनिंग और व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सी। हम वापस जाएंगे उसके अंदर कंटेनर्स के अंदर, क्या कह रही है, इट्स रनिंग, सही है, इट्स इज रनिंग। हाउ डू आई टेस्ट, वेब सर्वर है, पोर्ट 8080 पे चल रहा है, आई कैन गो टू पोर्ट 8080, सही है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, सॉरी आई कैन डू दिस, आई कैन गो HTTP, क्या मैं डालूंगा यहाँ पे,
localhost, localhost right? localhost 8080. अच्छा ये let's see if it's running or it's not running. So I guess it's not the proper way of writing. Uh, I- Let's see, let's see. How do I do this one? If I do, let me see, 80. It's also actually, let me see also. If I do, maybe it's running in WSL. क्योंकि Linux का था ना वो. Let me see. If I do curl localhost 8080, हाँ यहाँ पे I think ये यहाँ पे चल रहा है सही है. I think maybe let me see. I don't need W. If I do localhost 80, हाँ नहीं यहाँ पे connection refuse हो रहा है after 2 milliseconds. Let me check again. Let's go into the logs. I don't do troubleshoot too much, but this is open in terminal. सर हम पिंग की कमांड नहीं यूज कर सकते? What thing I can do? I mean, ping localhost होगा ना? That is not an issue. Let me see. Let me see. Ping a localhost. That is not the issue. क्योंकि ping को आपको वो नहीं चाहिए, port नहीं चाहिए ना. तो मेरा localhost तो ping कर रहा है. That is not the issue. What you need is a remote connection. Let's see यहाँ पे क्या हो रहा है. सही है? या logs के अंदर it will tell us. सही है? ये देखो उसने टॉम कैट को स्टार्ट किया अपाची टॉम कैट को 8080 के ऊपर. अरे देखो सारी जावा की लाइब्रेरी सारी कुछ इट इज ऑलरेडी देयर. सी है ये लोडेड अपाची. लेट मी सी इफ आई कैन मेक दिस वन बिगर. so there is a hyperlink at the top, fast Tomcat के साथ. Maybe click on that. ये open कर. नहीं नहीं हाइपरलिंक नहीं है. दैट इज द इमेज नेम टॉम कैट लेटेस्ट. दैट इज Okay. ऑफ द इमेज. अगर आप इमेज जाओगे ना यहाँ पे तो उसका टैग होता है. ये देखो टैग इज लेटेस्ट. So it is saying it's using the image Tomcat with the tag latest, right? This is what it is saying. But anyway, only show running containers, which is fine. Let's do okay. Inspect it will do something. ये देखो JDK इसने सब चीजें इसने already configure कर दी हैं. सही है? Anyway, I will troubleshoot this one. इसमें क्या मसला आ रहा है. सही है? But you got the idea कि fully configured application it is there. Let me see अगर उन्होंने हमें बताया हुआ वहाँ पे Docker Hub के ऊपर. सही है? If there is something on the Docker Hub that tells us कि इसके अंदर let me just do this. I don't troubleshoot too much on this one. यहाँ पे sometimes they tell you how to invoke. सही है? अच्छा वो कह रहा है ये डिफॉल्ट हमने किया. देखो कह रहे कंटेनर IP 8080. So if you can do this one. और वो कह रहे you can run it by like this -80 -RM. We can do like this also. Or if you need to access outside the host on port 8088. Now let's see container IP. Let's see container का IP कुछ और हो. Okay, it's not local host. Container का IP is different as. So yeah, let's take a look. So I can do docker ls. Sorry, it is not over here, it is over here. तो मैं कहता हूँ I need to see the list of all. I think yeah docker ps, sorry not ls. सही है? वो कह रहा है ये है आपका. सही है? और this is what's happening. सही है? तो it is there, it is running, it is port 8080.
So is there a different IP address? Let's take a look of this one. So yeah, Docker ES. अगर मैं उसको कहूँ, let's do something else just to see. हाँ मिस ये वाली है देखो. We'll use this command with the port 8088. मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि is it an issue क्योंकि ये इसके अंदर मेरा ख्याल रन कर रहा है WSL के अंदर. Just so we can do this one. I will go into Docker desktop और मैं इसको कहूँगा stop. वो स्टॉप हो गया. अब मैं यहाँ पे जाके आई कैन रन इट फ्रॉम कमांड लाइन और मैं इसको कहता हूँ सही है. मैं ये नहीं करूँगा. व्हाट आई विल डू इज आई विल से डॉकर क्या करूँगा लेटेस्ट. सही है. आई डोंट हैव 9.2. आप यू कैन गिव स्पेसिफिक वर्जन ऑल्सो. हाँ ये देखो पोर्ट वो ब्लॉक हुआ था. सही है. यहाँ से रन किया ना वो पोर्ट ब्लॉक हुआ था एक्चुअली 8080. अब उसने कर दिया वो. सही है. जो मैंने वहाँ पे किया था ना नाउ आई डिड इट यहाँ पे वो सारी लॉग्स में यहाँ पे नजर आई. पोर्ट वाज ब्लॉक्ड. वो कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा था ना. अब मैं करूँगा ना यहाँ पे सेम कमांड. ऑफ कोर्स द पोर्ट इज डिफरेंट नाउ. 8088 मैंने किया है 8888 बट यू गॉट द पॉइंट कि वो फायरवॉल पोर्ट ब्लॉक. ये देखो इट्स वर्किंग नाउ. सही है. सो वो फायरवॉल ने पोर्ट ब्लॉक किया था. जब मैंने कमांड लाइन पे किया ना इट ओपन द पोर्ट. उसने मुझे बता दिया कि ये पोर्ट ब्लॉक हुआ. वी वांट टू ओपन इट. नाउ इफ आई गो इनटू दिस वन, if I go into this one, I can do localhost 8088. So yeah, it's running fine. So yeah, यहाँ पे वो क्या दे रहा है मैसेज कह रहा है not found, which is fine. Web server is running. So you got the idea कि you can package with all the dependencies. उसे ये नहीं परवाह कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या है. सही है. It gave me everything. So this is the beauty of containers. आप पैकेज करके कंटेनर दे दो and it will start running. ठीक है. क्योंकि now pretty much this is what we ask customers. कोई जावा की एप्लीकेशन है कुछ है वो कहते हैं मैं क्या चाहिए. मैं कहते हैं यार इसका कंटेनर बना लो. सही है. and we'll run it. और कंटेनर को रन करने के लिए I'll show you कि माइक्रोसॉफ्ट के पास फॉर एग्जांपल इसी के अंदर एक्चुअली स्लाइड डेक के अंदर ये इसके अंदर था आई थिंक. Let me see. So yeah, make sure you go over this one. So this is the main point, right? Virtual machines containers क्या हैं? What is VDI? AVD के अंदर VDA देखना. वो नए points हैं हमारे सारे. सही है. हमने और जो देखा था कोई question है उसका. Let me finish this and we'll go over a couple of new things as well जो हमने पढ़ी थी. अब ये देखो इसने नाम क्या दिया है इसको. एक बड़ी टॉपिक है इसका कि इसका नाम जो है इनका अपनी कोई नेमिंग कन्वेंशन है. इन्होंने लिस्ट बनाई हुई. यू कैन गिव इट वॉट एवर नेम. बाय डिफॉल्ट इट गिव्स जस्ट स्ट्रेंज नेम्स बेसिकली. पूरी इसकी कोई इनकी है सम बैकग्राउंड ऑफ दीज नेम्स आल्सो. एनीवे यू कैन सी जो मैंने वहाँ से रन किया था ना इट इज़ रनिंग ओवर हियर एज वेल. Anyway, I don't want to go too much into this one right now. We'll maybe do a separate, maybe 2-3 hour. How do we build containers? और यहाँ पे अगर आप जाओ ना डॉकर की वेबसाइट के ऊपर भी it talks about that. How to build docker.com. Yeah, developers docs getting started. Use that one. ये देखो ये कंटेनर रन है. मैं कह रहा हूँ दिस इज द वर्क दैट इज यूज्ड टू रन कंटेनर्स. सही है. ये इन्होंने स्टार्ट की थी मूवमेंट डॉकर ने. सही है. इट्स अ डी फैक्टो रन टाइम. दिस इज व्हाट दे डेवलप्ड बेसिकली द कंटेनर रन टाइम. सही है. और इन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया हुआ. सो एवरीबडी इज यूजिंग इट प्रीटी मच. सही है. सो दिस इज व्हाट यू यूज. एंड डॉकर की जो API है डॉकर डेस्कटॉप इट इज अ टूल टू इंटरेक्ट विद कंटेनर रन टाइम. राइट. दिस व्हाट इट इज बेसिकली. राइट. और ये वही था. सही है. It works on my laptop but doesn't work anywhere else. Dependency hell. This is the whole value proposition, right? If you look at the container runtime, इसको देख लेना. These are good readings.
अगर नहीं टाइम डोंट डू इट बट आई मीन ये मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ इन चीज़ों की राइट सो यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आई पुट दिस इन द चैट एज वेल Sir, Docker deployment and containerization falls under DevOps engineers listing, or it's the role of someone else who put these deployments. हम बेसिक देखो एक हमारा जो काम है ना फ्रॉम सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव इज टू क्रिएट एन इमेज सही है दैट्स ऑल Yeah. हमें बस ये पता हो कि हमने पैकेज किस तरह करनी है अपनी एप्लीकेशन दैट्स ऑल किसने मैनेज करना है सारी चीज़ को दैट इज द आपकी जो डेवऑप्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड दोस काइंड ऑफ पीपल राइट तो अगेन don't want to go into too much of that thing but main thing is right now for you is what in image is and what is the use तो ये हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया I want to go over a little bit of Kubernetes also तो ये